Hello and welcome students in today's class. And in this short session, we will discuss about Surat Split. So you are aware that we are preparing for UPSC prelims or modern India का जो area है. And specifically, if we consider the national movement, Indian national movement. So in that topic, the very important incidents we are going to discuss today, and that is Surat Split. तो सूरत स्प्लिट की पूरी कहानी हम एक ग्राफिकल और डायग्रामेटिक फॉर्म में देखने जा रहे हैं एंड यू माइट बी अवेयर दैट a great historian once said that chronology is heart of history. We need to understand the chronology to take the grasp of the entire subject. पूरे सब्जेक्ट की क्लैरिटी आने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है. कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा कि एक मीम बहुत ही फेमस हो चुका था, क्रोनोलॉजी को समझिए. सो आज हम क्रोनोलॉजी के आधार से एक स्टोरी फॉर्मेट में ये सूरत स्प्लिट की जो घटना है, द इंसिडेंट ऑफ सूरत स्प्लिट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन अ वेरी वेरी इंटरेक्टिव मैनर. सो लेट अस स्टार्ट. If we consider the main sequence of events, the main chain of events starts from 1903. This is our starting point today, the year 1903. In this year, the partition proposals of Bengal was declared by the most unpopular viceroy of India. The partition proposals were publicly declared by Curzon, and he also declared that in 1905 we will डू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, उसको दो हिस्सों में हम बांटेंगे. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस पार्टीशन वाज टू सबसाइड द नेशनल मूवमेंट. जो नेशनलिज्म की आग पूरे देश में चल रही थी, उस आग को दबाने की कोशिश लॉर्ड कर्जन कर रहे थे. एंड द डे ऑफ पार्टीशन दैट वाज डिसाइडेड वाज 16th October 1905. And if we consider the Indian response to this declaration of partition, so it was very obvious response. It was very spontaneous response from the Indian side. The response was very quick, and all the national parties and all the regional parties present at that time in Bengal, they decided to boycott this partition. On 7th October 1905, an all-party meet was conducted and a boycott resolution was passed. Similarly, if we see the रिस्पॉन्स ऑफ कांग्रेस का अगर हम रिस्पॉन्स देखेंगे तो वो भी कई मामलों में सेम ही था. 1905 का जो कांग्रेस सेशन था, इन दैट कांग्रेस सेशन द कांग्रेस पास्ड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट रेजोल्यूशन. इफ यू सी द 1905 कांग्रेस सेशन, द चीफ ऑफ दैट सेशन वाज गोपाल कृष्ण गोखले, एंड इन हिज प्रेजेंस Congress passed the Swadeshi and boycott resolution. And in this manner, the Swadeshi movement actually was started by Congress in the response to the partition of Bengal. And next year, what happened? In 1906, the next session of Indian National Congress was conducted at Kolkata, and the chief or the president of that session was our grand old man of India, that is Dadabhai Nauroji. And in this year, two most important events took place in this Congress session. दो सबसे बड़ी बातें इस कांग्रेस सेशन में होती है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी और जिन पे बार बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है. 1906 में जो कांग्रेस सेशन हुआ है उसमें द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड, दैट इज टू गेट स्वराज फॉर इंडियन पीपल. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नेंस. ओके, एंड द नेक्स्ट मेजर थिंग एट Congress session of Kolkata in 1906 was the mediation by Dadabhai Nauroji. Students, if you consider the situation of Congress in 1906, Indian National Congress was divided between two groups. First was extremists and second was moderates. You might be aware very well. And what was the response of extremists and moderates to this partition proposal? आप सबको पता होगा कि obvious extremist का जो response था, extremist को स्वराज अभी के अभी चाहिए था. The goal of extremists to get Swaraj now and now itself. And hence, you might be aware that Bal Gangadhar Tilak, he expressed that Swaraj is my birthright and I will have it. Okay, so
Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Swami Arvind, all these people were extremist leaders, and they also demanded that the boycott movement should be transferred nationwide. The boycott movement should be extended nationwide, and that's why these extremists called it extended boycott. Students, you should be aware that there is difference between the boycott movement and extended boycott movement. Boycott means the boycott movement initially started at the level of Bengal itself, but the extremists demanded that this boycott should be extended to the national level. So boycott and extended boycott. These are two different things. Boycott was with reference to Bengal only, and extended boycott was with respect to the national level. And if you see the response of moderates, the moderates for moderates स्वराज was very distant goal. उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो मॉडरेट थे, वो धीरे धीरे आगे जाना चाहते थे. जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो भी पॉलिसीज है उसका फायदा उठाते हुए इंडिया के लिए वो एक अच्छा बेटर फ्यूचर चाहते थे और धीरे धीरे आगे बढ़ने में वो ट्रस्ट करते थे. दैट्स व्हाई फॉर मॉडरेट्स स्वराज वाज अ डिस्टेंट गोल एंड they wanted that the boycott movement should be limited to Bengal only. And in the Congress session of 1906, Dadabhai Nauroji did a major thing, that he mediated between these extremist and moderate leaders. Because the Surat split, the thing that happened in Surat, जो चीज सूरत में होने वाली थी वो शायद 1906 में ही हो जाती थी. सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में हुआ. जो चीज 1907 में होने वाली थी वो 1906 में ही होती अगर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी सब नहीं होते. क्योंकि इस टाइप का जो टसल है, इस टाइप का जो झगड़ा है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में, इट वाज एट इट्स पीक इन 1906 बिकॉज and it's only because Dadabhai Nauroji was a senior man, he was a respected man, both the groups respected him. So Dadabhai Nauroji was successful in passing the four major resolution of compromise between extremists and moderates. वो क्या फोर resolutions थे, compromise resolution कौन कौन से थे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. But for the time being, for the short time, Dadabhai Nauroji was successful to avoid the split in the Congress. But what Dadabhai Nauroji avoided could not be denied, could not be cancelled in future. दादाभाई नौरोजी ने एक साल तक पार्टीशन या एक साल तक कांग्रेस की स्प्लिट को बचाया, लेकिन अगले ही साल कांग्रेस में स्प्लिट हो गया. ओके, सो ब्रिटिश न्यू एंड एट दिस टाइम ब्रिटिशर्स कम इनटू पिक्चर. द रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश कम्स इनटू पिक्चर एंड ब्रिटिश न्यू दिस एग्जैक्ट सिचुएशन व्हाट एवर गोइंग ऑन इन कांग्रेस. And that's why they used their age-old policy, and that was divide and rule. Okay, and that's why, considering this situation, this drama in Congress, they declared Morley Minto reforms. And this was again an example of carrot and stick method. Okay, you can relate to this carrot and stick method, and Morley Minto reforms was a big carrot for Congress and for nationalist leaders in India. ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये देखो भाई, हम आपके लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं. तो रिफॉर्म्स क्या है? कैरेट है. और जब आगे वाला बंदा कैरेट लेने आता है तो उसे स्टिक से मारा जाता है. तो कैसे मारा जाता है वो आप ही देखिए. अभी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जैसे ही डिक्लेयर हो जाते हैं, मॉडरेट्स स्टार्टेड सपोर्टिंग दैट रिफॉर्म्स एंड एक्सट्रीमिस्ट स्टार्टेड अपोजिंग दोज रिफॉर्म्स. एंड इन दिस tussle, in this scenario, there was a tussle between extremists and moderates. If you see the Surat session of 1907, there was a very, very dramatic episode, of very, very dramatic environment at that Congress session. The Raj Bihari Bose was the president of the Congress at that time, and literally there was a havoc in Congress pandal. And finally, the Surat split happened. So, considering this entire scenario, considering this entire chronology, आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स used to implement their policy of divide and rule, और किस प्रकार से सूरत स्प्लिट हुआ. इसको हमने एक स्टोरी फॉर्मेट में समझा है. और द कंटेंट व्हाट आई एम यूजिंग फॉर दिस काइंड ऑफ लेक्चर सीरीज, आई हैव कवर्ड एनसीईआरटीज, आई हैव कवर्ड बिपिन चंद्रा, आई हैव कवर्ड सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय. All the possible resources have been utilized in developing these lecture series. So पिछले 25 साल में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं मॉडर्न इंडिया में, वो सारे के सारे हमारे इस प्रोसेस के थ्रू, इस लेक्चर सीरीज के थ्रू कवर होने वाले हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू कंसिडर
If you consider any kind of difficulty, you are free to comment and you are free to ask anytime. Thank you so much.